Okay, let's start with reactions of phenol. फर्स्ट रिएक्शन ये हमने ऑलरेडी किया है बट एक बार फिर से कर देते हैं. वी डिड दिस इन अल्कोहल्स. दिस इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल. कौन सा लिया था हमने? सोडियम. What happens when phenol reacts with sodium? What do we get? Sodium phenoxide. याद है पीपल ये? ठीक है. I repeat, what is the nomenclature for this? क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है सोडियम फेनॉक्साइड. ओके. सेकेंड रिएक्शन विथ NaOH. NaOH के साथ भी when phenol reacts तो क्या मिलेगा हमें? Second is reaction with NaOH. This reaction also tells you the acidic nature of phenol. तो ये हमारे पास phenol plus NaOH. Complete this for me. What will we get over here? Same thing. Sodium phenoxide again. And so just like acid base reaction जैसे हो गया वो salt and water. Next, third is reaction with sodium bicarbonate. What is sodium bicarbonate, people? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 है ये सोडियम बाइकार्बोनेट. The phenol does not react with sodium bicarbonate. तो phenol की एसिडिटी इतनी नहीं है that it will react with sodium bicarbonate. But how do I increase the reactivity of phenol? By addition of electron withdrawing group at the ortho and para, ortho और para या both ortho para position पे. तो ये अगर मैं अटैच कर दूं NO2 and तो यहाँ पे क्या मिलता है पीपल? What is the name of this acid? Excellent. इसको हम बोलते हैं picric acid. अभी इसकी एसिडिटी बढ़ गई. Now you can react this with NaHCO3. So again like acid base एक salt मिलता है. क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? O- and Na+. सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड बोल सकते हो प्लस CO2 प्लस H2. Getting that? This can also be used as something called as sodium bicarbonate test. See, phenol will not give this reaction, but कौन देगा? Picric acid, and because of CO2 there will be effervescence
तो ऐसे एक डिस्टिंग्विश टेस्ट आप बना सकते हो उसको. या आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल. दो एक सेपरेट लेक्चर करेंगे वेयर वी विल राइट डिफरेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, फेरिक क्लोराइड टेस्ट. दो तीन अलग टेस्ट भी है, बट यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, बट फिनॉल does not react with sodium bicarbonate. To make phenol react with sodium bicarbonate हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. We need to introduce an EWG at the ortho and at the para position. समझ में आया मैं क्या बोला. Yes or no. So when you are copying this, मैं भी वो लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो में तो आ चुका है वो सेंटेंस, आप ध्यान से लिखना. Distinguish test between, you can say like phenol and picric acid या carboxylic acid and phenol के बीच में. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट, टेल मी हाउ डू वी कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन. हमने किया है इन हाइड्रोकार्बन. एक्सीलेंट. सो एक्शन ऑफ जिंक डस्ट कुछ याद है, 11th स्टैंडर्ड में किया है ये इन हाइड्रोकार्बन्स. तो जिंक डस्ट में क्या होता है पीपल, वी हैव फिनॉल and zinc. This will give me benzene. यार इसको ऐसे बनाया था, plus Zn. This is action of zinc dust on benzene. Next reaction हमारे पास है oxidation of phenol. So in oxidation of phenol, if you oxidize phenol using sodium dichromate and H2SO4, okay, this gets converted into anyone remembers, ये हम 11th स्टैंडर्ड में टॉटोमेरिज्म में करते थे. दिस डज नॉट अंडरगो, इसको क्या बोलते थे हम, बेंजोक्विनोन. ठीक है. नाउ Na2CO, Na2Cr2O7 and H2SO4 can also be, because we use Na2Cr2O7 and H2SO4, it produces chromic acid. ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, chromic acid. So instead of writing that, sometimes they might even write over the arrow chromic acid. Chromic acid is really strong oxidizing agent. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SOA. I repeat, chromic acid is a really strong oxidizing agent. एक और है फ्रेमीज reagent करके भी होता है जिसके हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल के लिए उसको लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है. सो दैट इज एक्शन ऑफ जिंक डस्ट. उसके बाद हमने क्या किया अभी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है पीपल, वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बट यहाँ पे दो वे में करेंगे. सबसे पहला, वी परफॉर्म नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये आप लिख सकते हो लाइक 293 to 298 केल्विन के आसपास. So nitration at room temperature.
gives me orthonitrophenol and it gives me paranitrophenol. I repeat, what do we get people? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल. ठीक है, विथ मी टिल हियर. देयर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में. क्या प्रॉपर्टी है? रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये सेम एग्जांपल लिखा है. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज अ वेरी peculiar property. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है ना, कौन सी वाली एज बॉन्डिंग? इंट्रामोलिक्यूलर एज बॉन्डिंग. डू यू रिमेंबर दिस? हमने लिखा है. Now because of this intramolecular H bonding, okay, it has a very low boiling point when you compare that with paranitrophenol. Has low boiling point. And the reason for that is orthonitrophenol cannot form intermolecular hydrogen bonding with water. But पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयरफॉर पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर and hence has higher boiling point. We can use steam distillation and separate the two. I repeat, हम क्या use कर सकते हैं people? We can use steam distillation to separate orthonitrophenol and paranitrophenol. With me till here? So with dilute HNO3 at room temperature we get orthonitrophenol and paranitrophenol. But अगर हमने सेम किया, इसको 6A लिखता हूँ. But if I perform the same nitration using concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, हमें मिलता है क्या मिलता है पीपल? पिक्रिक एसिड. I repeat, what do we get? Picric acid. Did you people get that? Yes or no? Any questions over there idhar tak? Chalo. However, there is a new method to make picric acid. You start, सबसे पहले फिनॉल लिया, and concentrated H2SO4 के साथ we first perform sulfonation of phenol. अभी यहाँ पे जब सल्फोनेशन किया, what you first get is something like this. ठीक है? And then you perform nitration using nitrating mixture. We get picric acid.
सो पहले एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव एंड उसका नाइट्रेशन किया, वी गेट picric acid. Did you people get that? Now this is given in the NCERT, not in the form of a reaction but in the form of a sentence. Just nitration of benzene, phenol के नीचे they've given this in the form of a sentence, and एक JEE Advanced paper में directly straightforward पूछा था ये. Did you people get that? Any questions still here? समझा? चलो. After nitration usually next reaction हम कौन सा करते हैं people? Sulfonation. So same thing again in sulfonation. Sulfonation में हम कैसे start करेंगे? We start with phenol plus we have concentrated sulfuric acid एक बार हम रिएक्शन कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर which will be somewhere around 293 to 298 Kelvin. सेकेंड हम कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज 373 Kelvin या 100 degrees. What we get in the first case is we have ortho या 2-hydroxy benzene sulfonic acid. And what are we getting in the second case? 4-hydroxy benzene sulfonic acid. जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है, that is the reason ortho product is the more stable product, because in the first case we get kinematically stable product, but in the second case we get thermodynamically हमने GOC में किया है ये. What is a kinematically stable product and what is a thermodynamically stable product? So nitration done, sulfonation done. उसके बाद usually हम क्या करते हैं? Excellent. Bromination, halogenation. Very nice. ठीक है? So next reaction is halogenation of phenol. Same thing, we start with phenol. यहाँ पे halogenation में हम क्या करने वाले people? We are going to do bromination. हम यहाँ पे bromination करेंगे plus Br2. But here bromination is done in the presence of a non-polar solvent. क्या यूज कर सकते हैं हम? जो भी लिस्ट हमारा पूरा नॉन पोलर सॉल्वेंट चल जाएगा यहाँ पे, और वी कैन यूज पोलर, याद है ब्रोमीन वाटर भी लिखते हैं बहुत टाइम. व्हेन यू हैव अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट पहले क्या मिलेगा? orthobromophenols and then para-bromophenol, 2-bromophenol, orthobromophenols बोलो, और we get 4-bromophenol, para-bromophenol,
plus HBr, and in case of a polar solvent क्या मिलेगा people हमें? 2, excellent. So 2, 4, 6 tribromo phenol. Did you people get that? Para product is your major and ortho product is your minor. Para major क्यों? Because less steric hindrance, and ortho is minor because of two bulky groups next to each other, वहाँ पे steric hindrance होगा. ठीक है, चलो. Okay. ठीक है, so halogenation in the presence of a non-polar solvent, then in the presence of a polar solvent. Let's move ahead with the next reaction. Next people हमारे पास है Friedel-Crafts reaction. Now people, phenols are very poor at giving Friedel-Crafts reaction. तो हम directly भी बोल सकते हैं कि phenols do not give या are very poor at. Phenols are, or phenols, चल ऐसे लिखते हैं, are very poor towards कौन से reaction people? Towards Friedel-Crafts reaction. Can someone tell me why? ऐसे क्यों होता है? Excellent. Because in Friedel-Crafts reaction हमारा Lewis acid कौन है? AlCl3. अब वो जो Lewis acid है anhydrous AlCl3, मैकेनिज्म में याद है? AlCl3 Cl minus AlCl4 बन जाता था and CH3 plus. इंस्टेड ऑफ अटैकिंग CH3Cl वो किसको अटैक करता है? OH को अटैक करने लग जाता है, because of course it is looking for electrons and better source उसको ऑक्सीजन में मिल जाता है and कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनता है. Did you get that? So जब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बन रहा है, then how do we produce? ठीक है, this was Friedel-Crafts. So ये हमारा हुआ first set of reactions of phenol. Next lecture में people will start with, हमें और बहुत सारे reactions करने हैं. Riemer-Tiemann reaction, Kolbe-Smith reaction, Daikin reaction. ठीक है, so next class we will continue with reactions of phenol.